आपण सर्वांचा स्वागत आहे. બધા આવેલા મહેમાનનો મારો સપ્રેમ नमस्कार. तुमसो सगळ्यांचो हाव योगदार करता. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Welcome to one and all to the West Zone edition of the first ever MSME Honors by Tally. MSME is a major contributor to the socio-economic development of the country. In India, the sector has gained significant importance due to its contribution to GDP and exports. The sector has also contributed immensely with respect to entrepreneurship development and employment, especially in semi-urban and rural areas of India. While MSMEs are crucial to the pulse of any economy, they are really celebrated for who they are and where they come from. Small businesses are spread across the length and breadth of the country, and while from the outside, they may appear very similar to each other, but they are the epitome of diversity. Despite these differences, what connects them all is their spirit, the values they believe in, and their penchant for innovation, sustainable growth, and care for the people they work with. These traits not only define them, but also make them heroes in their own right. So with that background, let me start the proceedings for today by calling up to the virtual stage Mr. Kapil Chopra, Senior DGM, Zonal Partner Sales, West Zone, Tally Solutions. Thank you, Pamit. Good morning, ladies and gentlemen. Hope all of you are safe and healthy. I, Kapil Chopra, on behalf of Tally Solutions Private Limited, would like to welcome all of you and our esteemed delegates and speakers. We are thankful to Mr. Narendra Stolkar ji, who is Joint Director, MSME, Mr. Ashish Mehta ji, Director General, Federation of Association in Maharashtra, Mr. Nagendra Mehta ji, Secretary, Imitation Jewelry Manufacturing Association, Mr. Pulak Bajpai, Deputy Editor, Dainik Bhaskar. Mr. Bajpai is our jury members also. And we also thanks to Shri Madhukant Parekh ji, who is President, Imitation Jewelry Manufacturing Association. Nagendra ji and Shri Madhukant ji very instrumental in providing updated information to their members on all the development, either technology or government policies. So friends, many congratulations to all of you on International MSME Day. MSMEs are backbone of every country, and for India, they are more important considering the diversity of our country. And as stated by Pramit also, like India has 6.4 crore MSMEs and their contribution to our GDP is approximate 30%. They are the significant contributor to employment generation. So friends, Tally Solution has started celebrating International MSME Day since 2009, along with all the MSME and trade associations. We have also instituted MSME Honors Award from this year, an initiative to celebrate International MSME Day on 27th June. Aim of this to recognize and celebrate positive impact of MSME. Nomination has been completed for this year, and soon we will recognize them in this event. MSME honors will be celebrated across 5 categories. So let's understand what are these 5 categories. First category is Wonder Woman in MSME. This award is to honor women who have braved the odds to build successful businesses themselves and are role model in the business community. Second category is business veterans. To recognize veterans who have built strong, sustainable foundations for their business. The next category is social patrons. To recognize those entrepreneurs who went above and beyond to help people in need.
but in changes in their businesses practices to support society. Another category is digital transformer. For those businesses who have learned new ways to grow despite the odds by adopting digital tools and solutions. And last but not least, idea icon, to recognize those businesses who have only rode the wave of challenges through new ideas, but also managed to beat it despite COVID-19 challenges. So friends, I welcome all of you once again, and let's start the event with tribute to MSME. Thank you. कभी उस एक मुस्कान से जो सब मुमकिन कर जाए, जीत की उस खुशी या हौसले की आह में पहचान लेते हैं उन हीरोज को हम बिन बताए उन लफ्जों से। आंखों में बंद बेचैनियों से, कलाई में छिपी उस जिद से उनकी पहचान लेते हैं हम हीरोज को दिल से निकलते उन इशारों से। इरादों पर जिनको यकीन हो, हर मोड़ पे मंजिल दिखे जिनको, दिख जाते हैं उनमें हीरोज हमें, मुश्किलों में भी हाथ बढ़ाते हुए। कभी किसी की यादों में, पन्नों चलती कहानियों में रह जाते हैं इनके नाम दिलों पर, बनकर हमारे हीरोज हमेशा। हर वो बिजनेस जिनके इरादे मुश्किलों से भी मजबूत होते हैं, जिनकी मेहनत से देश आगे बढ़ता है, वो हैं और रहेंगे हमारे हीरोज हमेशा। और इन हीरोज को टैली इंटरनेशनल MSME डे के मौके पर सलाम करते हैं। Thanks a lot, Mr. Kapil, for those inspirational words and for that lovely video that you showed for all of us. And of course, पूरे वेस्ट जोन के लिए इससे ज्यादा गौरव की बात क्या हो सकती है that just yesterday, former Chief Minister of Maharashtra, Mr. Narayan Rane, was appointed as the MSME Minister, Honorable Minister of MSME. And I think it is just the right occasion that we have all come together here today to celebrate the MSME honors by Tally for West Zone. So with that, I would now like to call up Mr. Narendra Estolkar, Joint Director, MSME Development Institute, Aurangabad, to share his thoughts with all of us. Over to you, sir. Namaskar. Good morning. First of all, I would like to thanks to Tally Solutions Private Limited for giving me this opportunity to have a discussion or have a talk with all my MSME Parivar members on the occasion of first MSME Honors 2021 MSME ceremony for West Zone region. On behalf of my branch MSME Development Institute Aurangabad and my MSME Parivar, first of all, I would like to welcome all the Tally participants, Tally Solution team, then Shri Ashish Mehta ji, Director General of Federation of Association, then Shri Nagendra Mehta ji, Secretary Imitation Jewelry, then Shri Pullak Bajpai ji, Deputy Editor of Dainik Bhaskar, Shri Kapil Chopra ji, Senior DGM, and all the participants. See, I have great pleasure or immense pleasure to be here with all of you. As you all are aware, and our host has just now said that our former Chief Minister has got our cabinet ministry of our
MSME मंत्रालय will be. So without going that much depth, I would like to congratulate all our MSME members that we are having our own minister as our MSME minister. Sir, during last 1.5 years, we are facing, we are going through a tough challenges due to COVID pandemic. As all of us are aware that during this COVID pandemic, due to lockdown, all of our businesses or all activities we have to keep closed. But to bring back to the to earlier stage prior to pandemic, Government of India has taken immense lot of initiatives. The out of one of which is from our ministry, Mantralaya, is Champions Portal. The board you are seeing at my background, that MSME Champions Portal, a small hand to help you to become a big. All efforts are made here to provide all kind of information of what are the MSME schemes, how one can apply for registration. As all of you are aware that Udyam registration is free of cost and it is on the self-certification basis. And for that purpose, our Mantralaya Ministry has come up with the udyamregistration.gov.in portal. I urge everyone, every participants, to visit our Champions portal. There you find the link of Udyam registration portal, udyamregistration.gov.in, and please assure yourself that you are putting your information in that portal only. What happens when you search on Google for Udyam registration? There are a number of private players or private sites are there who are then using our portal, then migrating their link to our portal and putting your information on our portal and getting registration. But they are not providing you free of cost. They are charging you from 500 rupees to 2,500 rupees. And then MSME got in trouble. Sometimes they doesn't issue their certificates, their registration certificates, etc. So I request all of you to please visit our Champion portal or authentic udyamregistration.gov.in portal for your registration. तो सर ये बात हो गई अब रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका बिजनेस चल रहा है, आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट्स अगर बेचना है ना मार्केट में तो देना है, अगर गवर्नमेंट में बेचना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. इसके तहत 358 items are reserved only to procure from micro and small enterprises. The government of India has, through this policy, given the 4 benefits. That first is tender set free of cost, then EMD exemption, then L1+15 clause ka benefit hai, and 358 items reserved for purchase from micro and small enterprises. The whole objective of this policy is for central ministry, department, and PUCs that they should procure their 25% procurement from yearly budget from these micro and small entrepreneurs. And out of this 25% procurement, 3% is reserved for women entrepreneurs and 4% is reserved for the entrepreneurs who are belonging to SC/ST categories. So there is a big advantage or opportunity for our micro and small entrepreneurs to participate in government tenders and government purchase with the help of avail the benefits of this PP policy with the help of Udyam registration, which they are going to get through online. तो सर अब आपके मार्केट भी प्रोडक्ट भी बनाया, मार्केट में बेचा भी, उसके बाद क्या होता है सर, काफी समय में लास्ट पैंडेमिक में भी काफी लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो इसके लिए पेमेंट रिसीव करने के लिए उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समाधान पोर्टल बनाया है, www.samadhan.gov.in. अगर किसी का पेमेंट
आना बाकी है, मोर देन 90 डेज हो गया, वो जो भी आपके टेंडर कंडीशंस है उसके बाहर चला गया, 45 डेज, 90 डेज, 120 डेज, जो भी आपने टेंडर कंडीशन एग्री किए हुए हैं उसके ऊपर चला गया है, तो दे कैन फाइल देयर ग्रीवेंस ऑन समाधान पोर्टल, सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, जिसे हम फैसिलिटेशन सेल कहते हैं, एमएसएमई फैसिलिटेशन सेल कहते हैं, वो इसमें इंटरवेन करेगी और दोनों पार्टीज को नोटिस भेजेगी, दोनों पार्टी से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, दोनों का स्टडी करेंगे और दोनों में सुलह करेगी कि जल्द से जल्द उनके पेमेंट का निपटन हो जाए। अब हो गए पेमेंट की बात, तो अभी पैंडेमिक में काफी लोगों ने ग्रीवेंस डाली थी, कंप्लेंट की थी कि भाई हमारे पास स्किल्ड मैन पावर जो था वो सब चला गया है, अभी माइग्रेशन हुआ है, तो माइग्रेशन के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संपर्क पोर्टल बनाया है। समाधान संपर्क पोर्टल पे सारी ये जानकारी, संपर्क पोर्टल पे सॉरी परचेस का दिया है, समाधान, संपर्क और संबंध पोर्टल में जो हमारे टेक्नोलॉजी टूल रूम्स है, टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, उनका जो भी ट्रेनिंग्स पार्टिसिपेट किए हैं वहां पर, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का कोर्स किया है, जो भी इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहां पर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं और ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जाता है, तो स्किल्ड मैन पावर भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से संबंध, समाधान और संपर्क, ये 3 पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किए हुए हैं। आप सभी लोग उसके ऊपर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और जो भी बेनिफिट वहां से मिल रहे हैं उसको अवेल कीजिएगा। तो सर, ये तो रही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जो भी इनिशिएटिव्स लास्ट फ्यू इयर्स में हुए हैं। मैं आप सभी को और खास करके टेली सॉल्यूशंस को धन्यवाद दूंगा कि आपने जो प्रोडक्ट जो अवार्ड्स की कैटेगरी भी चूजी है वो भी सही है, वुमेन्स को बढ़ावा एम्पावरमेंट करने के लिए, बिजनेस वेटरनिस को, सोशल बैकग्राउंड्स को, मैं सभी को जो भी पार्टिसिपेट हुए सभी को धन्यवाद दूंगा और मैं यही पे अपनी वाणी को गिरा। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक्स सो मच। Thank you so much, Narendra Estolkar ji, for sharing those thoughts with us. Next, it's my honor and privilege to call up Mr. Ashish Mehta, Director General, Federation of Associations of Maharashtra. Sir, if we can have you on the virtual stage to please share your thoughts. Namaskar and a very good morning to all. I am Ashish Mehta, Director General of Federation of Association of Maharashtra. FAM is an apex body of all associations of Maharashtra. We have more than 800 member associations as well as individuals under our belt. We act as a bridge between the traders and the business community of Maharashtra with the government. We help government in applying new policies, rules, regulations smoothly, and also take up the grievances of the traders with the central, state government, and even with the local bodies, and resolve it to the satisfaction of all. Today, firstly, I would like to thank and congratulate Tele for starting such a good initiative and acknowledging the contribution of MSME and magnifying it by giving the honors and giving the awards to them. I would request all to give a thumping applause to them so that a good effort is really acknowledged. MSME is a backbone of any economy. It contributes almost nearly to the 30% of the nation's GDP, and maybe around 45% of the exports of the nation is through MSMEs only. And then the employment generated by MSME is stupendous. The wheels of economies are driven by MSMEs only. What is more encouraging is the locations of MSMEs in the rural and backward area, providing employment opportunity to the rural-based population who are grossly or either underutilized, underemployed. And the potential and the inclusive development that the MSME give, it reduces the regional imbalances and helps in a large-scale rural employment as well. MSME has unique domain knowledge and expertise and are nimble with cost-effective and are able to improvise a lot better through the cost-effective innovation. And in India, we have our Indian jugards to make things work and deliver to the expectations of all. Modi Sarkar has recognized MSMEs and
continue to approach the highest priority sector and by forming a special MSME ministry before a few years, and it has been led by till yesterday Sri Nitin Gadkari ji, and now since yesterday evening by our own, I proudly say he is from Maharashtra and Mumbai. So I would congratulate Sri Narayan Rane ji also, and hope the MSMEs of Mumbai and Maharashtra will able to gain a lot and will progress a lot under his leadership. The secret of rise of Germany as an industrial power was indeed driven by the robust and vibrant MSME. And such is the latest potential of MSME sector as an engine of growth. We are sure we will get this sooner or later, the 5 trillion economy that our beloved PM has thought of, and it will be nearly achieved, maybe not later than 2025. We are delighted. See, I represent traders, so I would really appreciate, and I am really happy that we are delighted that traders and retailers and wholesalers have been included in MSME. Though sadly, that there has been a certain apprehension of since last 2-3 days by certain MSME associations. Okay, by this will act as a deterrent, and this will exhaust the availability of the resources for MSME. Which I certainly say it will not be like that. MSME will be complemented and supplemented by the traders in a big way, and it will help them in developing furthermore and improving the economy of not only MSME and the traders, but the economy of India as well. In support of my comment, I would like to present MSME, all MSME to recollect as to how the Parsi population who were driven out of their own country and came to the shores of Gujarat a few decades ago, and the king, instead of saying no to them, had shown him a glass full of milk, categorizing that there is no room for any new people to come. But the intelligent Parsi put sugar in that, and they also symbolize that we will not disturb the present the resources or the population that is still there. We will mix with them like sugar in the milk. So I take this opportunity to assure you on behalf of entire traders and businessmen of Maharashtra that the traders, when they are included in MSME, they will act as sugar in the milk which MSME is having, and together we will progress, and together we will achieve the best for the Indian economy. I would like to thank Delhi for inviting me as a speaker on the occasion and celebrating MSME honors and giving me a chance to share my views. This would probably be the maiden speech by any trade association after being included in MSME just before 2-3 days. I wish all the best to the participants who have been nominated for the awards, and I would like to thank the juries also for selecting the best out of the all nomination. It would have been a difficult task for them, but they must have done it in a better way. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, Mr. Ashish Mehta ji, for sharing those thoughts with us and for sharing that inspirational journey of the community, which has indeed created a difference in business today in India. Next up, I would like to call up Mr. Nagendra Mehta, Secretary, Imitation Jewelry Manufacturers Association, to please share his thoughts with all of us. Over to you, Nagendra ji. धन्यवाद नरेंद्र जी, आशीष जी मेहता और टेली की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने ये एमएसएमई का जो सेक्टर है 2 साल से टेली की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई एक संस्थान एमएसएमई के रोल को, जो इंडिया की इकोनॉमी में जो रोल है, उसके बारे में हाईलाइट कर करके लोगों के सामने रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आशीष मेहता जी ने बहुत अच्छा बताया। ट्रेडर्स को भी अभी इंक्लूड कर दिया गया है, और ट्रेडर्स को इंक्लूड करने के बाद में बहुत बड़ा एक एक्सपेंशन मिल जाएगा एमएसएमई के अंदर। और नरेंद्र जी अष्टोलकर जी ने भी एमएसएमई मिनिस्ट्री की तरफ से क्या-क्या प्रयत्न किए हैं, इसके बारे में विस्तृत बताया। मैं थोड़ा सा इस विषय में कुछ अलग से कहना चाहूँगा कि एमएसएमई इंडस्ट्री का रोल क्या है, इसको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है, तमाम संस्थान भी इसके रोल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
रोजगार देने के संदर्भ में वो हो, चाहे एक्सपोर्ट को लेकर के हो, चाहे इंडियन डोमेस्टिक जो जीडीपी है उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन हो, सबने इसको सराहा है। लेकिन इसकी वास्तविक समस्या जो है, और खास करके पेंडेमिक के बाद में जो इसकी समस्या बनी है, उसको लेकर के अभी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लगभग इस 15 महीने में एमएसएमई की कमर टूट चुकी है। कंटिन्यूअस लॉकडाउन चलने की वजह से वर्कर्स का काफी पलायन हो गया है। पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सरकार अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही है। सरकार ने लोन के लिए फैसिलिटी कर रखी है, बैंकों से लोन देने की बात कर रखी है। ठीक है, हम ऐसा मानते कि मान लो ये चालू कर भी दिया हमने, हमारा बिजनेस शुरू हो गया, सरकार ने बैंकों ने फाइनेंस कर दिया, हमने ब्याज पर पैसे ले लिए और ब्याज पे पैसे लेने के बाद में हमने अपना काम चालू भी कर दिया। लेकिन जब तक मार्केट के अंदर डिमांड नहीं निकलेगी, तब तक प्रोडक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और जब ट्रेडिंग कम्युनिटी की समस्या है कि मार्केट कंटिन्यूस इतने समय से बंद है, पेंडेमिक है, ये भी अपनी बाध्यता है, व्यवस्था है कि इसको बंद रखना पड़ रहा है। और जब मार्केट में माल नहीं बिकेगा, तो इंडस्ट्री जो एमएसएमई है, वो प्रोडक्शन निकाल कर भी क्या करेगी? और जब माल प्रोडक्शन निकालना बंद कर देंगे, तो वर्कर्स का बेरोजगार होना स्वाभाविक है। उसके बाद में जब मार्केट में माल ही नहीं जा रहा, तो पेमेंट वैसे पहला का जो बाकी है, वो पेमेंट भी नहीं आएगा। मेरा ये रहेगा कि किस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करें। नरेंद्र जी से मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार तक हमारी इस बात को पहुंचाए कि जब तक लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इसमें काफी करने की आवश्यकता है। जब तक लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं रहेगी, तब तक एमएसएमई के अंदर पेमेंट की दुविधा बनी रहेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी। और तमाम गवर्नमेंट के डेटा भी इस चीज को बता रहे हैं कि एमएसएमई की हालत इस समय ठीक नहीं है। हम कितनी भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को और सत्यता को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी लोन लेने की प्रक्रिया में एमएसएमई वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र जी, आप इस बात को अगर नोट कर लें कि अभी भी एमएसएमई वाले को एक शक की निगाह से देखा जाता है। जब दुनिया भर में, भारत भर में एनपीए इतना हो चुका है और एक 10-20 लाख रुपए का एक छोटा सा लोन लेने के लिए व्यक्ति जाता है, उसको इतनी खाना पूर्ति और इतना बैंक से काम करवाती है कि वो देखता है कि नहीं यार, अभी ये नहीं ले लोन तो ठीक है, हम तो बैठ करके। अगर इसमें कुछ सुविधा हो जाए और कुछ नीचे की दर पर अगर ब्याज मिलना शुरू हो जाए, तो एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मैं इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारी एसोसिएशन काफी टाइम से प्रयत्न कर रही है कि इसको एक उद्योग का दर्जा मिले। हम चाहते कि अभी तक जिन रोजगार वालों को ये इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है और जो उसके दायरे में आती है, सरकार को इस पे गंभीरता से विचार कर करके उसको कम से कम इंडस्ट्री के दायरे में लाना चाहिए। एमएसएमई के सामने सबसे बड़ी थ्रेट जो है इस समय में, वो थ्रेट है चाइना से अंडर इन्वॉइसिंग होकर के बहुत बड़ी मात्रा में जो इंपोर्ट हो रहा है माल। और ये केवल कोई हमारी इमिटेशन ज्वेलरी की समस्या नहीं है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा है और सरकार की खुद की रिपोर्ट बनाती है कि 1 करोड़ का माल 10 लाख या 5 लाख के बिल में इधर आता है। इतना ज्यादा इंपोर्ट होगा या कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को उतनी मार पड़ने वाली है और वो उसकी ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है, उसकी ग्रोथ को हैम्पर करने वाला है। अगर एमएसएमई मिनिस्ट्री इसमें कुछ कारगर कदम उठाए और मंत्रालयों के साथ में बातचीत कर करके इस तरह की जो प्रैक्टिस है, चाइना से माल आने को रोक नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये निश्चित तौर से कर सकते हैं कि कम से कम फेयर मार्केट प्राइस पर वो माल आए। इंडियन एमएसएमईज को अगर बढ़ाना है, तो चाइना से आने वाले माल को अगर आप रोक नहीं सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अंडर इनवॉइसिंग की जो माल प्रैक्टिसेज है उसको बंद करना पड़ेगा और तभी जाकर के हमारी एमएसएमई यहाँ बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जिनको कॉर्पोरेट रोजगार नहीं दे पाता है। ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो महिलाओं घर में बैठ करके काम करती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अपना पति काम पे चला जाता है, तो बैठ करके अपने 50-100 रुपए कमा करके अपने जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करती है। ऐसे तमाम कदम सरकार को उठाने के लिए मैं निवेदन करूंगा एसोसिएशन की तरफ से। हमारी एसोसिएशन ने इस पेंडेमिक के अंदर हमारे जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए समय-समय पे हमने वेबिनार किए
और वेबिनार के जरिए हमने समय समय पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को के बारे में उनको बताया। न केवल बताया, लेकिन हमने बैंकों के साथ टाई अप भी किया कि किस तरह से आपको लोन मिलेगा, कि सस्ते दर पे मिलेगा और आप उस लोन को लेकर के आप बिजनेस को रीफाइनेंस करिए। हम लोग बैठ कर के केवल एमएसएमई के इम्पोर्टेंस क्या है और इसको ये एक रोजी पिक्चर देख करके हम हमारा काम नहीं करते हैं। हमें वास्तविकता के अंदर झाँकना पड़ेगा। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। हम बहुत अच्छी पिक्चर्स लोगों के सामने रखते हैं, वैसी अच्छी पिक्चर है नहीं। मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी में झोपड़पट्टी में जाकर के भी एमएसएमई के लिए एमएसएमई की कैटेगरी में आने वाले उद्योगों को देख रहा हूँ, उनका विश्लेषण कर रहा हूँ। उसके बाद में मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे अभी ये कि पैंडेमिक चल रही है, एमएसएमई इंडस्ट्री ने भी तमाम अपनी वित्तीय जो बाधाएँ हैं, तमाम उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पैंडेमिक में सोशल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको भरपूर तरीके से निभाया है। उन्होंने छोटे-छोटे गाँवों में वो काम करने वाले लोग हैं, छोटे शहरों में काम करने वाले हो, चाहे मेट्रोज़ में काम करने वाले हो, एमएसएमई के लोगों ने भी अपने वर्कर्स को सँभाल के रखा। उन लोगों को अनाज की व्यवस्था, जहाँ ज़रूरत पड़ी उनको दवाइयों की व्यवस्था, टीकाकरण चल रहा है तो टीकाकरण की व्यवस्था, इस तरह से उन्होंने अपने दायित्व का सारी वित्तीय बाध्यताएँ होने के बावजूद भी निर्वहन किया है। क्योंकि सीएसआर के अंदर तो एक कंपल्सरी उनको करना है कॉर्पोरेट्स को। लेकिन स्वेच्छा से जो इस तरह की जो राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उसका उत्तरदायित्व भली-भांति निर्वहन किया है। हमने इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अन्यथा पालघर और जहाँ पर ये ट्राइबल इलाका है, हमारे संस्था के अध्यक्ष मधु भाई हैं, उनकी अगुवाई में हमारे 4000 से अधिक महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है, जो इमिटेशन ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग कर सके, घर पे बैठ के कुछ ज्वेलरी बना सके, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। हम ऐसे-ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भूखमरी की वजह से भी डेथ हो जाती है। मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमई को उभारने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयत्न करना पड़ेगा। हमारे ट्रेडर्स बंधुओं की भी अपनी समस्या लंबे समय से दुकानें बंद है, उनके रेंट लग रहे हैं, इसके बैंक से जो फाइनेंस लिया हुआ है तो उस पर ब्याज भरना पड़ रहा है। सारी स्थिति चरमरा-सी गई है। हमें किस तरह से सारी चीज़ों को कंसोलिडेट कर के समय-समय पर सरकार तक एक ऐसा फोरम बनना चाहिए एमएसएमई का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि एमएसएमई का कोई ऐसा फोरम है, हम लोग अपने-अपने लेवल पे अपने-अपने एसोसिएशन की तरफ से जाते हैं। लेकिन एमएसएमई का कोई ऐसा हमारा ट्रेडर्स का और मैन्युफैक्चरर्स का कोई ऐसा फर्म, जैसे ये भी आशीष जी फार्म चलाते हैं, वैसा फर्म तैयार करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हम लोग एमएसएमई की मिनिस्ट्री के पास, अब नारायण राणे जी को मैं बधाई देता हूँ, वो अभी हमारे नए मंत्री बने एमएसएमई के, हमारे महाराष्ट्र से हैं, बहुत-बहुत बधाई उनको। और निश्चित तौर से एक इस तरह का फेडरेशन बनना चाहिए, जो सरकार को एमएसएमई की समस्याओं के बारे में बताए। और मैं टेली को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फोरम हमको प्रदान किया, जिससे हम हमारी बातों को आपके सम्मुख रख पाए। हमारे को-पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह से आशीष भाई मेहता ने बताया कि हमारी क्या है, और जो उन्होंने एक बात कही कि इंडियन जुगाड़ कर के हम चीज़ों का काफ़ी कम कर सकते, रेट या कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं। आशीष भाई, मैं इस आप बात से सहमत थे कि हम जुगाड़ू है और इससे काफ़ी है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, और आदमी अपने दिमाग से देशी साधनों की वजह से वो कुछ न कुछ ऐसा कर पाता है कि हमारा काम निकाल देते हैं। लेकिन काम निकालना जितना से ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। इसके लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स समय-समय पे सब जगह हो, रिसर्च हो, डिज़ाइनिंग के बारे में, जैसे हम इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित काम करते हैं, तो किस तरह से हम लोग अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, नई मशीनरीज़ क्या है, इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, वैसे सरकार की तरफ से कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह खोलने की व्यवस्था है। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया को सुनते हैं, तो प्रक्रिया को सुनने के बाद में आदमी पीछे हट जाता है। थोड़ा-सा उसको और सुगम बनाने की मैं आवश्यकता समझता हूँ। मेरा निवेदन नरेंद्र जी सुन रहे होंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम लोग एमएसएमई के साथ इस संबंध में बात करें। आप लोगों ने मुझे सुना और हमारी कुछ ग्रीवेंसेस है, मैंने कुछ सत्यता को आपके सम्मुख रखा है, शायद उससे सहमत होंगे। मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और टेली को मैं खास तौर से बधाई देता हूँ कि वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो भी आज अवार्ड के अंदर विनर्स हैं, उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ। ये वाक़ई आशीष जी ने ठीक कहा कि जूरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है कि किन्हें ये अवार्ड देवे और किन्हें ये अवार्ड नहीं दे।
तो मैं समझता हूँ कि निष्पक्षता के साथ में ये अवार्ड देंगे और जो भी इसके विनर होंगे उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और हम इसी तरह से एमएसएमई के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और आशीष जी, मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जैसे आप फार्म चला रहे हैं, अब आप भी हमारे इस एमएसएमई के सेक्टर में पिछले दिनों में आगे हैं, तो आप और हम लोग बैठ करके बातचीत के जरिए एक बड़ा फोरम बनाए और हमारे देश को एक नई उन्नति के मार्ग पर लेके जाए और विश्व के अंदर हम चाइना को कॉम्पीट कर सके, ऐसी व्यवस्था हम कायम करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Can I share a thought, please? हाँ जी सर। I fully endorse Nagendraji's view, and there has to be some forum to represent MSMEs as well in a collective way. And the suggestions that he has given are most welcome. I am ready to, participate in them and shoulder the responsibility along with every participant who is ready to, come forward with his problem solutions and his novel ideas as well. We can take it up. Federation has always been done. And to tell you, Narayan Rane ji से मेरा बहुत close touch है. I know him personally. तो उनको मिलना, it will not be a big deal. मुंबई में जब भी वो यहाँ available रहेंगे, we can always meet. So I would suggest कि we can make a particular memorandum, एक general जो भी अपनी expectations है, we can go and meet him. We can forward our memorandum and try to convince him to help us in resolving the issues as well. So I am there 24/7. I will share my contact details. I would request apna Pritam ji to share my contact details with all the participants who are interested in knowing that, and all are welcome at any point of time. And I am there to help whatever best we can from Federation. Thank you for your kind word, Ashish ji. And I am very much hopeful that now after this pandemic, we all will join hands together and take up the issue with the ministry as soon as possible. And we must help out our fraternity to come out of this financial crisis and to grow our industry at a very speedy pace. And we should be enabled to compete China in a short span of time. Thank you. Yeah. Thank you so much, Mr. Nagendra Mehta ji, for sharing those thoughts with all of us. Mr. Ashish Mehta ji for also weighing in. And indeed, it is of course our responsibility and duty to ensure that the flag of MSMEs is unfurling even higher as the days go by. I would also like to take this opportunity to thank Mr. Madhukant Parekh, President of the Imitation Jewelry Manufacturers Association, for his continuous support and encouragement to the cause of MSMEs. And with that, ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to now invite to the virtual stage Mr. Pulak Bajpai, Deputy Editor and Head of Business Section at Dainik Bhaskar, also an esteemed member of our jury. Sir, can we have you here and so that you can share your thoughts with us on this August occasion? Over to you, sir. Thanks, Pramit, and जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने जब जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुआ और जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज और एमएसएमईज थी उनको जो है देखा, तो इन लोग को जो चयन करने का जो तरीका था टैली का, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो पांचों कैटेगरीज थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है उनका चयन किया गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है उसकी मार्किंग करी और उन जो भी उसमें जो है सेलेक्ट हुए होंगे उनको जो है मैं वो करता हूं कि वो और आगे बढ़ेंगे। और टैली ने ये जो ये प्लेटफॉर्म दिया है एमएसएमईज को, उसके जरिए वो जो है मेरे ख्याल से बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, खासतौर से जो है नए आइडिया और जो विमेन एंटरप्रेन्योर को जो है बढ़ावा मिलेगा इसको। और दूसरी चीज, विनायक जी और नागेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एमएसएमईज के लिए जो है बहुत सारे सॉल्यूशन देती है सरकार, बट उसको जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उनको आगे एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं पिछले 13-14 साल से बिजनेस को जो है देख रहा हूँ, एमएसएमईज को बहुत क्लोज से देखा है और बहुत सारी जगह जो है मैं गया हूँ, तो उनकी खासतौर से पेंडेमिक के बाद बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि मेरे ख्याल से उनको जो है उनका सोल्यूशन मिलना उनके लिए बहुत आवश्यकता है उस चीज की।
और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार जो है बहुत इसमें हेल्पफुल है। सरकार कोशिश कर रही है कि उनको जो है प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको मदद की जाए, उनको आसान कर्ज मुहैया कराया जाए और उनको जो है उनके बिजनेस को अच्छा प्रोग्रेस मिले, ये भी कोशिश में है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है टेक्नोलॉजी। आप आज के जमाने में अगर उनको आज की टेक्नोलॉजी मिलती है तो वो आसानी से जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा, उनको बिजनेस करने का जो आसान जरिया है, उनको बहुत आसानी से अपना बिजनेस करने दिया जाए। उनको जो है और भी जो है टैक्स में छूट दी जाए और जो है उनको ये कोशिश की जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया करा सके। तो इस पे भी जो है हमें काम करना चाहिए। और बीइंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि एमएसएमईज को कवर करें। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है मैं और चाहूंगा कि जो नए आइडिया हैं उनको भी जो है आगे ले आया जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि हमने 5 कैटेगरी में जो है उनको रिकॉग्नाइज किया और इससे उनको जो है बेहतर सॉल्यूशन मिलना और बेहतर बिजनेस मिलने में शायद उनको जो है ये हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। और बाकी आशीष सर और नागेंद्र जी ने जो है बहुत अच्छा बोला कि वो एमएसएमईज को की मदद करने के लिए बिल्कुल आगे आने वाले हैं। और अभी नए एमएसएमई जो मिनिस्टर आए हैं उनके जरिए भी है जो उनको हेल्प पहुंचाएंगे। तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं इस चीज को लेके। बस मैं ये चाहता हूँ कि टैली और बाकी जो एसोसिएशंस हैं, बाकी जो यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, उनको अच्छे से अच्छे आईटी और टेक्नोलॉजी जो है अगर हम देंगे तो वो जो है अच्छे से एक्सपेंड कर पाएंगे अपना बिजनेस। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो है नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, उनको जो है सपोर्ट की जरूरत है। और वही नए एंटरप्रेन्योर जो है पुराने बिजनेसमैन को भी सपोर्ट करेंगे। और ठीक, और सरकार भी लोकल सोर्सिंग पे ज्यादा जोर दे रही है। दूसरी बात जो नागेंद्र जी ने बोली कि हमें चाइना से लड़ना है, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल लेवल पे जो है चाइना जो है इस समय कमजोर है। और उसको जो है अगर हम यहाँ अपने आत्मनिर्भर भारत को अगर असल में हमें मजबूत करना है तो उसके लिए एसएमई और एमएसएमईज को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से ये टैली और बाकी पैनलिस्ट के माध्यम से एसएमई और एमएसएमई जो है वो और मजबूत होंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। बाकी जितने भी जो भी कैटेगरीज में जिनको जिनको अवार्ड मिलेगा उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। Thank you so much, Pulak ji, for sharing those lovely words with all of us. And in fact, I would like to take this opportunity to thank all the dignitaries who have joined us here today to grace this occasion and for inspiring us with whatever message you had to share with all of us. Next, we would like to share a video message from our MD, Mr. Tejas Goenka. Let's hear what he has to say. Hello everyone. Thank you for joining us for our very first MSME Honors. We have been serving the MSME community for the last 35 years and have learnt so much from you all, and for this we can't thank you enough. With the MSME Honors, we want to recognize and celebrate the immense contributions that all micro, small and medium businesses have been making to the economy and society at large. These honors have been built on a simple set of principles. The MSME community is large and diverse, and we must recognize its diversity. And that we have role models who can really share their experiences with us to help us in our own journeys. I would like to take this opportunity to thank you all for the tremendous response that we have seen, and of course, thank our esteemed jury. I look forward to interacting with our awardees and learning from them. Congratulations to all of you. Thank you so much, Mr. Tejas Goenka, for sharing that message with all of us. So without further ado, ladies and gentlemen, it is time to now step into that part of the program which each and every one of us has been waiting with bated breath, the MSME Honors announcements. But before we move ahead, I would like to take this opportunity once again to thank our esteemed jury members from the bottom of our hearts, Mr. B.C. Bharatiya, National President of CAIT, CA Atul Gupta, immediate past President of ICAI, and Mr. Pulak Bajpai, who's there with us here today,
Deputy Editor and Head of Business Section at DainikBhaskar.com. Going through more than 700 nominations from across the country is no easy task, but they have done a great job in what I'm sure was an extremely difficult task. So with that, we will now start with the MSME honors announcements with our first category, the category of business veterans. So we know of entrepreneurs who are in business playing the short game, but then there are those who have always visualized their business as a going concern. They started with humble beginnings, and through their hard work, dedication, passion, and perseverance, they have been able to grow their business manyfold. Through the ever-evolving business landscape, ups and downs, they have been resilient and made sure that their business stood the test of time. The Business Veterans category honors such businesses who build strong and sustainable foundations to continually thrive and grow. So with that, let's have a look at the MSMEs we are recognizing under this category. Founded in the year 1975, this enterprise from Surat was one of the first to start sales and service of air conditioners and refrigeration products across South Gujarat. Passionate about honesty, customer satisfaction, and new technologies which can take the business ahead, they continue to thrive on the strength of referential sales generated from a set of loyal customers. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Surat Refrigeration and Engineering Company. And we have a message from Mr. Mahendra as well. मेहरनौज गदियाली फ्रॉम सूरत रेफ्रिजरेशन। मैं टैली के साथ 6 साल से जुड़ा हूँ। टैली बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने आज तक ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं है। इतना अच्छा प्रोग्राम, इजी प्रोग्राम, इसीलिए मुझे अपना टैली के लिए बहुत मान है। टैली वेरी फाइन एंड गुड प्रोग्रामिंग फॉर ए बिजनेसमैन। Thank you very much for choosing to me for award. Thanks very much. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Gadiali, for those words, and many congratulations to you and your entire team. Established in 1985, this business from Vadodara started out by trading in tractors and threshers. In 2012, they started manufacturing threshers in their 1,000 square feet manufacturing facility. And today, they manufacture and sell over 15 types of equipments to farmers. With a year-on-year growth of 25%, their now 25,000 square feet manufacturing facility caters to a customer base of over 3,500 farmers. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Rushi Agro Industries. And here is a message from Mr. Anil Patel. Hello everyone, myself Anil Patel. I am glad to receive this award from Telejury. Firstly, I dedicate this award to my father Ranchodbhai Patel, who started Rushi Agro Industries at a small space as a trading company in 1985. After 20 years of hard work, hardship and commitment, our customer base increased and we become popular, so we took our parents' company and started our own manufacturing in new space. Since then I am looking after all manufacturing, sales and production. As well belongs to a middle class family and without any business background. It was a long journey till now, for which I am grateful to my family for their constant support, hardworking employees and family farmer whose trust built up this company. Thank you. Thank you so much, Mr. Anil Patel, and many congratulations to you and your team
at Rushi Agro Industries. Founded in the year 1935, this enterprise from Sangli runs Maharashtra's biggest textiles and ready-made showroom spread across 60,000 square feet. They have built their legacy by reaching out to customers through exhibitions and franchisee stores across major talukas in Maharashtra, which has helped them boost their revenue by 35% year on year. Let's hear it for Ravindra Vastra Niketan. And we have a message from Mr. Athane. धन्यवाद टीम टैली, धन्यवाद टीम अल्टीमेट, धन्यवाद रविंद्र टीम जिनकी वजह से ये MSME अवार्ड की काबिल हो सका. Thank you so much for the message and many congratulations to you once again. For the last 33 years, this business from the home of Lord Parshuram, Chiploon in Maharashtra, has been a renowned name in footwear wholesale. Their dedication towards offering variety at competitive rates has led to a long list of satisfied and loyal customers. With a growth goal of 10% each year, they are well on their way with 2 new branches opened with many, many more to follow. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Fazlani Traders. And here is a message from the owner as well. On this happy and honorable day, I would like to thank first of all Allah Azza wa Jal for this happy day. After that, I would like to thank Team Tally Solutions. On this day, I am remembering my late father and founder of Fazlani Traders, Haji Sharif Fazlani. After that, I really thank from the bottom of the heart my mother. Without her blessing, we couldn't do that. For all suppliers, for all customers, for co-workers, partners, well-wishers, and employees, each and every person who helped us in any manner, I would like to thank all of them. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Fazlani, for sharing that sentimental message with us, and many congratulations to you as well. Started in 1984, this enterprise hailing from Mumbai has made its name in the global marketing space for the manufacturing and export of metals and non-metals in the form of pipes, plates, and fittings. The early adoption of computerization, investment in software, and focus on long-term customer relations has helped them cater to more than 300 happy customers with a revenue that has leapt 3,000 times since inception. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Amardeep Steel Center. And we have a message here from Mr. Shiv. पुरस्कार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं बहुत सम्मानित हूँ. मैं अपने परिवार और अपने कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने के लिए और हमें इस तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. मुझे उम्मीद है कि हम समय के साथ सफलता के नए स्तर प्राप्त करेंगे और हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे और अमरदीप स्टील सेंटर एक नया इतिहास रचेगा. I'm sure it definitely will, sir. Thank you so much for the message and many congratulations to you. And with that, we come to the end of the first category of the MSME honors, the business veterans. Moving on to the next category of digital transformers. Digital, as you are all aware, has been the buzzword amongst businesses for the past few years. However, it has been a luxury that mostly has been adopted by large organizations. Small businesses have been challenged by the absence of reliable sources on know-how of digital technologies and support to implement them. Yet, some amongst this group, by their sheer penchant for learning new ways to grow their business, have not only shown a sense of appreciation for digital tools and technologies, but have also successfully adopted them into various areas of the business to drive efficiency and run the business better. The Digital Transformer Honors
recognizes such enterprises. So let's have a look at the MSMEs we are recognizing under this category here today. Based out of Gandhinagar, this business runs the show completely on software. In fact, they have been using the process plant software technology right from the start, which enables them to operate the plant from anywhere where internet is available. Yes, you heard that right. So ladies and gentlemen, let's put our hands together for the winners in this category, Om Shivai Specialty Paper Private Limited. And we have a message from Mr. Piyush Kumar Trivedi as well. Hi, my name is Piyush Trivedi from Om Shivai Specialty Paper Private Limited and Mahadev Craft Paper Private Limited. We are manufacturer of paper against plastic. I would like to thank to Tally Solutions for being my business account partner and make my accounting easy. Also, I would like to thank my family member such a good support in my business. Thank you very much. Thank you so much and many congratulations to you and the entire team. And that was the MSME we recognized under the category of digital transformers. We will now move on to our third category of idea icons. The last 18 months threw open a whole host of challenges for businesses across the country. With severe restrictions, losing workforce to reverse migration, scarcity of resources, the struggle was real. The situation was further aggravated for small and medium enterprises, for whom it became a battle for survival. Under such circumstances, finding new ways to keep afloat became a way of life for many of them. The Idea Icon Honors recognizes those businesses who not only rode the wave of challenges through new ideas and innovations, but also managed to beat it. So with that, let's have a look at the MSMEs we are recognizing under this category today. This business from Mumbai provides impactful, measurable, outsourced virtual and shared CFO services. With a team of experienced finance controllers and CFOs, they have helped customers streamline their digital financing and accounting back office operations with a dashboard-driven MIS, which enables them to analyze business KPIs and take timely decisions. Ladies and gentlemen, please put your hands together for IXCFO Services Private Limited. And we have a message from Mr. Sanjay Gaggar as well. Thanks very much for recognizing the role of CFO services by Tally Solutions, which is playing stellar role in the MSME ecosystem around digitization. I am also thankful to my team members for their dedication and equally supportive family members for my entrepreneurship journey in this last 10 years. Thanks very much. Thank you so much, Mr. Gaggar, and many congratulations to you and your entire team. Hailing from Ujjain, this enterprise is known for its patented product, multifunctional quick oil chamber clean machines, which has seen a phenomenal success with over 18,000 installations all over the country. This invention has helped OMCs such as IOCL, BPCL, HPCL, Reliance gain 100x growth in lubricant sales from retail outlets, with customers getting better mileage and pickup with the decreased engine sound and emissions. So let's hear it for Rock Engines Private Limited. And we have a message from Mr. Kishore Chabra. It's a great feeling when you're recognized for your work. Thank you to the jury and Tally Solutions for this MSME honor. I am grateful to the stakeholders, oil marketing companies for recognizing my invention, and especially my team across all parts of India for putting their efforts and making this happen. And with this, we are further motivated and committed to bring more such inventions and ideas to solve problems
in automobile industry. Thank you. Thank you for the message, Mr. Kishore Chabra, and many congratulations to you as well. And that brings us to the end of the third category, that was idea icons. Moving on to our fourth category, social patrons. Some superheroes do not wear capes like we have seen in all those cartoons from childhood days. They silently serve beings around them when they are at their most vulnerable. Small businesses have always been known to help local communities when they need it the most. The last year saw unprecedented situations resulting in people from all walks of life getting severely impacted. The Social Patron Honors recognizes those entrepreneurs who went above and beyond to help people in need, brought in changes to their business practices to support society, and made umpteen sacrifices while they themselves faced scarcity of resources. So let's have a look at all the MSMEs we are recognizing under this category this year. This business from Bilaspur donated 20 oxygen cylinders to hospitals and NGOs, donated towards the upkeep of children of martyrs who lost their lives on the battlefield, distributed ration kits and cooked food to the poor and needy, arranged a team of doctors for ready consultation in these tricky times, organized transport services for the diseased and for patients. Their efforts helped more than 1,000 needy folks, 300 patients, and 475 families at their time of need. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Business Education and Training Academy. And we have a message from Mr. Kiranpal Singh. Let's hear that. थैंक यू सो मच टेली फॉर दिस अवार्ड एंड अप्रिशिएशन। पर इस अवार्ड के असली हकदार हैं वो सारे ड्राइवर भाई हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, हमारे सुपरवाइजर्स जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सुपरवाइज किया, सारे BNI के पार्टनर्स जिन्होंने फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट किया, करियर पॉइंट वर्ल्ड स्कूल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जिन्होंने अपनी गाड़ियां अवेलेबल कराई, इन सब के ही सहयोग से ये कोविड के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हो पाई। सो असली हकदार ये सारे लोग हैं, हम तो केवल एक बीच की कड़ी थे। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Kiranpal Singh Chala, for that humble message, saluting you and your team for the amazing work that you have done. Based out of Nanded, this enterprise has been providing meals since the past 1 year to about 175 patients at the civil hospital. At the cancer hospital at Latur, they have been similarly supporting 75 patients on a daily basis. Showcased for the philanthropy by Doordarshan, they continue to endeavor so that no one has to go hungry in these challenging times. So let's hear it for DR Traders. And we have a message from Mr. Rajesh Mittal. Let's hear that. मेरा नाम राजेश दयानंद मित्तल, लातूर महाराष्ट्र से हूँ। सर्वप्रथम मैं टैली कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। साथ ही श्री विष्णु प्रसाद सारडा, इनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। और मैं इस अचीवमेंट के लिए मेरे परिवार और मेरे मित्रगण इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहकार्य से मैं सेवा कार्य में जुड़ सका हूँ। और इस कार्य के लिए मुझे उमेश पोपड़े, अतुल कोचेता, आशीष पेरवानी, जगदीश अड्डा, सुहास पाचेगावकर, वेंकटेश ठनके और काफ़ी लोगों का सहकार्य रहता है, जैसे कि शिरीष कुलकर्णी और पवन रामदास। ये लोग भी मुझे हर बार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सहकार्य करते हैं। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Rajesh Mittal, and many congratulations for your team for the great work that you have done. Hailing from Raipur, this business has overcome the toughest challenge of convincing parents in rural areas to send their daughters for training and placement services to another town or state. This was achieved via mass counseling of parents, which led to the placement of almost 50% of the trained candidates. Today, it has caused difference in the lives of over 800 women who have a sustained income thanks to this initiative. So let's hear it, ladies and gentlemen, for Smart Skills Bits and Bytes Private Limited.
And we have a message from Mr. Pawan Agarwal. Hi, I am Pawan Agarwal, MD and CEO of Smart Skills Bits and Bytes Private Limited. I would like to thank the Almighty. I would like to thank the jury of MSME Honors. My thanks to the organizers Tally Solutions. My thanks to my family and my team members for their immense support. I have always believed in to be compassionate and selfless, and I will continue doing so. Thank you. And that is indeed very encouraging to hear, sir. And we wish that you never stop and continue to go ahead. Many congratulations to you and your entire team. This enterprise from Nashik distributed meals twice a day to over 200 people at a time when the pandemic was at its peak. Not just that, they joined hands with other social workers in Nashik to provide accommodation for them at a Jain Bhavan, as well as timely meals for everyone present there. So let's hear it, ladies and gentlemen, for Sarvadanya Traders. And we have a message here from Mr. Sharad. Let's hear that. नमस्ते, मी शरद गुगे, नाशिक. आज जो मला टॅलीकडनं जो पुरस्कार घोषित करत आहे, खरं तर याचे मानकरी सर्वच आहे. याच्यामध्ये माझं कुटुंब असेल, माझा दुकानचा जो काही स्टाफ असेल, आम्ही जे काम केलंय त्याच्याबद्दल टॅलीने जे आमची निवड केली आहे त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम मी टॅली कंपनीचे खूप आभार मानतो आणि असंच काम करत राहील ही तुम्हाला ग्वाही देतो आणि 2 शब्द थांबवतो. Thank you so much, Mr. Kuge, for the message, and many congratulations to you and your team. This enterprise from Bhavnagar has been providing employment to people with disabilities who contribute more than 50% of their workforce. This initiative has gone a long way to boost their morale, courage, and confidence as they lead a life of dignity by virtue of being earning members of the community and the society. So let's hear it, ladies and gentlemen, for Microsign Products. And we have a message from Mr. Nishit Mehta. Let's hear that. Hello, I am Nishit Mehta, CEO and founder of Microsign Products in 1978. As such, I am very much thankful to the Tally solution, and they have come up with the award giving to the MSME on the basis of their good work. As such, we have considered to go for a human values and how we can give the solution to the differently abled people in our mainstream under inclusive practice, and that we are doing since 1986. I really feel that you have the consideration parameters about the human values. It is really heads off to you that this is the correct time and high time to consider about these things to make human values, human chain all over the world as a oneness, and oneness is very much necessary on the basis of the human values, good quality work for uplifting and connecting each other in humanitarian ground. And we have considered differently able people give a solution with the dignity of life and solution also, and making them self-dependent and financially strong. I am very much thankful for considering Microsign as awardee, and I am very much thankful to popularize this. Our philosophy may prosper everywhere, and it will give a better solution
to the differently abled people in the society itself with dignity. Thanks a lot. Thank you so much, Mr. Mehta. And one could totally understand that message came right from your heart. And indeed, human values will continue to be at the center of everything that we do, everything that millions of MSMEs around the world are doing. So many congratulations to you and the entire team at Microsign. With that, we come to the end of the fourth category of the MSME honors, which is the social patrons. And last but not the least, we have the category of Wonder Women. Women entrepreneurs are changing the business landscape like never before. Their ideas, purpose, passion, and most importantly, their focus on building sustainable businesses is having a positive impact on the extended ecosystem and the economy. Not just that, these entrepreneurs are inspiring an entire generation of women to not only join the entrepreneurship bandwagon, but also become successful at it. The Wonder Woman Honors recognizes those businesses which are headed by women who have braved the odds to build successful businesses themselves, and today are role models in the business community. So with that, ladies and gentlemen, let's have a look at the MSMEs we are recognizing under this category today. Based out of Latur, this business is headed by a Wonder Woman who started all by herself with only 51 sari varieties being churned out from a 10 by 10 room. 20 years later, they operate out of a 4-floor building with over 25,000 product varieties, traveling across India to handpick raw material to suit the customer's needs, to incentivizing loyal customers and expert salesmen to boost sales. They have done it all. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Dev Krupa Sari Center. And here is a message from Ms. Pooja Jagdish Tapadia. I am so Pooja Jagdish Tapadia, owner of Shri Dev Krupa Sari Center, Latur, Maharashtra. Greetings to all. I am honored to be receiving this award. I would like to thank Tally for recognizing my work and Vishnuji Sada sir for nominating me for this award. It's always a great feeling when your work is recognized and appreciated. I would like to take this opportunity to thank my Guru Dr. Virupaksha Shivacharya Maharaj Ji and my family members for their continuous support. I would also like to thank all my co-workers for the amount of work and effort they put in every day to make this happen. Thank you so much. Thank you, ma'am, and many congratulations to you and the entire team at Shri Dev Krupa Sari Center as well. This enterprise from Mumbai is headed by a Wonder Woman who sensed the growing demand for Lebanese and Middle Eastern food products and capitalized on the same to launch a successful homegrown brand. Under her leadership, they broke even in just 5 years and have enjoyed a phenomenal growth of 50% since launch. So let's hear it for Doen Fruits LLP. And we have a message from Mrs. Kiran Dhameja. Let's hear that. Hi, this is Kiran Dhameja. I'm the co-founder of Doen Foods LLP. Doen Foods is into manufacturing and retailing of Middle Eastern and Mediterranean gourmet foods in India. Doen Foods is my second venture. It's indeed a gratifying moment for me to have been recognized for creating a successful brand like Doen, and I thank Tally for this recognition and the efforts to celebrate the spirit of entrepreneurship, especially for women entrepreneurs in India. Thank you. Thank you so much for the message, Ms. Dhameja, and many congratulations to you and the entire team at Doen Foods LLP as well. Hailing from Navi Mumbai, this business is headed by a Wonder Woman who took a leap of faith by investing almost all her savings to start a marketing firm. The firm provides 360-degree strategic marketing plans to MSMEs to brand and scale their business.
Riding on their core strengths of dedication, hard work, networking, they cater to clients across India and the US. Ladies and gentlemen, please give it up for MVW Network International Private Limited. And let's hear the message from Ms. Rachna Chaudhary. Hi, my name is Rachna Chaudhary, and I'm the founder director of Media Valley Works. Media Valley Works, the registered entity is called MVW Network International Private Limited, established in 2013. I'm really delighted, and I thank Tally Solutions to have given this great recognition of being the Wonder Woman of the Year. And that too, the Wonder Woman during the pandemic year is something which puts me also into deep, shock and gratitude, because it's been really tough during this year on pulling on resources, doing business, maintaining accounts, compliances, all put together, things have been really tough. Thank you so much, Ms. Rachna Chaudhary, for the message, and many congratulations to you. May you keep up the good work in the days to come. This enterprise from Nashik is headed by a dynamic duo of Wonder Women with a vision of upholding menstrual hygiene amongst women across the country. Their commitment towards manufacturing sanitary napkins and napkin disposal machines for women has seen them multiply the revenue 5 times since inception and grow from 20 to more than 200 happy customers. Ladies and gentlemen, please, let's hear it. A virtual round of applause for Happy Nari Care Products Private Limited. And let's hear a message from the owners themselves. I really thanks to Tally Solutions and jury for awarding us Tally MSME honor. Our team, Happy Nari, are grateful to Tally for recognizing our business and its contribution to society, which aims to empower women of India. Thanks to all my associate director, Mr. Jitendra Nikam, Mr. Anil Kumar Devri, Mrs. Saili Devri, and whole Happy Nari team for this support. Thank you so much. Thank you so much for the message, ma'am. Many congratulations to Sonali ji, Saile ji, and the entire team at Happy Nari Care Products Private Limited. And with that, we come to the end of the MSME Honor Ceremony for the West Zone by Tally Solutions. Many congratulations to all the winners. Once again, we have indeed come to the end of the ceremony, but before we wrap up, I would like to take this opportunity once again to thank a few people without whom this day would not have been possible. First and foremost, Mr. Narendra Estolkar ji, Joint Director, MSME Development Institute, Aurangabad. Mr. Ashish Mehta, Director General, Federation of Associations of Maharashtra. Mr. Nagendra Mehta, Secretary, Imitation Jewellery Manufacturers Association. Mr. Madhukant Parekh, President of the Imitation Jewellery Manufacturers Association. Mr. Pulak Bajpai, Deputy Editor and Head of the Business Section at Dainik Bhaskar. And Mr. Kapil Chopra, Senior DGM, Zonal Partner Sales, West Zone, Tally Solutions. All the MSMEs who have nominated themselves, my salute to each and every one of you, because your nominations helped us to learn your stories and getting inspired from them. And last but not the least, each one of you for having taken out the time to attend the ceremony here today and to grace us with your presence. Have a great day ahead to each and every one of you. God bless, take care, stay safe. Namaskar.